Life in this pristine Himalayan state of Uttarakhand is far from a bed of roses. In this newly formed state, grappling to establish its identity, problems range from lack of employment opportunities to severe water scarcity, inaccessible terrain, and poor infrastructure. Livelihoods are dependent on subsistence farming and a money order economy. Due to the large-scale stress migration by men, the women left behind battle enormous physical and psychological hardships. कतले पौन बेरखाने पौन बियो हर खाने पौन बियो जब दूध गाड़ सब ले लिखा जब कले बैंक सोर जाए जब हम रिता हूँ हमारे घर में तो जब हम घरों काम करते था तो बच्चा बहुत परेशान करता हम स्कूल जाना था देर में था पानी देते 4-5 किलोमीटर दूर से पानी दे कौन था तब उन्हें तो खाना खान था न तो उनका कपड़ा धोया मिलता था हम तो 1-2 बार पानी देना मुश्किल था। जब मैं क्लास 8th में थी उस समय मेरे गांव में पानी की बहुत ही समस्या थी और मुझे पानी के लिए अपनी माँ के साथ बहुत दूर कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी में जाना पड़ता था। वह लाया गया पानी भी साफ ना होने के कारण मुझे कई बार पेट में दर्द, डायरिया जैसी बीमारियां हुई थी। Recognizing the specific needs of disadvantaged and often remote communities, the Himothan Pariyojana, launched by the Sir Ratan Tata Trust in December 2001, is aimed at sustainable natural resource management with a focus on arresting and reversing the process of environmental degradation in Uttarakhand. The project has 3 components in its first phase: enhancing rural livelihoods through participatory watershed development, improving community health through drinking water and sanitation interventions, and livelihood enhancement through farm and non-farm activities. Interventions in providing drinking water supply schemes and improved sanitation are aimed to mitigate the hardship of the rural population of Uttarakhand living in geographically remote areas, most approachable only by covering several kilometers on foot. Four local non-profit organizations who had experience in carrying out community-based demand-driven water supply and sanitation works were chosen as project facilitators. They include Himalayan Gram Vikas Samiti (HGVS) in Pithoragarh district, Himalayan Institute Hospital Trust (HIHT) in Tehri Garhwal district, Society for Motivational Training and Action (SMTA) in Uttarkashi and Dehradun districts, and Kasar Trust in Bageshwar and Chamoli districts. In May 2002, pre-feasibility exercises were conducted in 48 villages based on local demand for improved drinking water and sanitation infrastructure. The pre-planning criteria of village selection was technical feasibility and community willingness to bear 10% capital costs and 100% operation and maintenance costs. हमारी संस्था पिथौरागढ़ जनपद में हिमोत्थान परियोजना के अंतर्गत 11 ग्रामों में परियोजना का संचालन कर रही है। गांव से डिमांड आने पर उनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी और नीड असेसमेंट कर साथ में गांव के लोगों की 10% अंशदान देने की इच्छा शक्ति को देखते हुए गांव का चयन किया जाता है। सबसे बड़ी बात इस परियोजना की ये रही है कि इसमें लोगों का ज्ञान बढ़ा है, लोगों की टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ी है, लोगों में ऑनरशिप बढ़ी है और इन सब चीज़ों के हो जाने से इसकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ी है और सुनिश्चित हुई है। A year-long planning phase from November 2002 created awareness about project aims and built rapport with the community while collecting baseline data. Beneficiaries formed groups called management societies to plan, implement, operate and maintain project interventions. Capacity building programs for these societies included mason and fitter training and demonstration of sanitation infrastructure. Demonstrating how sanitary latrines, roof rainwater harvesting tanks,
polyhouses, etc. work fueled individual demand for such facilities. हम अगर बताना चाहें तो इसमें कितना मीटर लगेगा? After having detailed discussions among themselves on merits, demerits and financial implications of various water supply scheme alternatives, the community decided the technical option most suited to them in agreed-to-do meetings. Based on the community demand created for individual items and agreed technical options, detailed technical reports or DTRs were prepared after extensive field survey. The DTRs included aspects like drawings and designs of water supply schemes, benchmarks and cost estimates. The DTRs were then appraised by an independent technical agency for technical competence and cost efficiency. In the process of appraisal, detailed field investigation for discharge adequacy, sustainability of sources as well as water quality were carried out. Requirement of catchment area protection works to ensure perennial flow throughout the design period and probabilities for preventing the sources from pollution were also verified. The implementation phase starting early 2004 has so far seen the completion of infrastructure of water supply, sanitation interventions and catchment area protection work across 23 villages. The transparency of procedures and wholehearted community participation is sharply evident in every aspect of material procurement, testing, implementation and information sharing regarding expenses by all. Motivational incentives for individual items like toilets, polyhouses, vermicompost, garbage pits, etc. to the extent of 40% of the total cost was given under the project. Catchment area protection plans ensured the sustainability of water supply schemes, especially in summer. This included nursery raising, planting saplings in degraded land, constructing check dams to prevent soil erosion, and promotion of horticulture and organic farming. Other features included skill upgradation of women's self-help groups towards income generation activities, a personal hygiene and environmental sanitation awareness program, maternal and childcare training for women between 15 to 45 years, and exposure visits for construction-related issues, and overall efforts in improving the quality of life. हिमोत्थान परियोजना ने एक तरह से उत्तरांचल में क्रांति ला दी है। इसका स्वरूप इस प्रकार है कि पेयजल एवं स्वच्छता को केंद्रित करते हुए अन्य विकासों की तरफ भी पूर्णतः ध्यान दिया गया है। अब महिलाओं के पास समय की बचत हो गई और इसका उपयोग उन्होंने अपने अन्य कार्यों में भी किया, जैसे कि बीज उत्पादन, फल उत्पादन, घर का समुचित रखरखाव व अन्य कार्यों में किया। हर त्योहार में हम स्वच्छ घर सर्वेक्षण करनो और भदर चानो बर्तन डेगी से नहीं ना आतें और खाना बर्तन डेगी से नहीं ना आतें और बर्तन नाखून काटे से नहीं ना आतें और पूछनो उन्होंने कि बर्तन टीकाकरण हो रहे न हो रहे और आंगने सफाई चानो और शौचालय सफाई चानो और फिर जो घर स्वच्छ पाई जा और जो घर गंद पाई जा वो जब हमारी सार्वजनिक मीटिंग हुई वो प्रस्ताव बढ़ावे हम मीटिंग में प्रस्तावित करो और बताओ कि स्वच्छ घर ये है कौन 25 साल में हम गर्मी और बरसात में 3/4 मरीज अपन कन में रखबीर ये बाटे अब अस्पताल तक लीजिए छी स्वच्छ पानी पे तब बटी एक ले मरीज हमें अगले साल गर्मी में यहाँ पे अस्पताल तक नहीं ले गया। The operations and maintenance phase ensures the long-term sustainability of interventions. The community of Himothan villages has been imparted training on various operation and maintenance activities, documentation and working out water charges to be realized from the consumers. Community has been made to understand the importance of water quality, system of chlorination, preparing bleaching powder solution, charging chlorinator and regulating and testing doses of residual chlorine have been explained to the community members.
Advantages of regular collection of water charges from the consumers and creating a reserve fund for carrying out major repairs have also been explained. They have also been advised to get the systems insured against natural calamities. हिमोत्थान परियोजना के तहत जो हमारे वहाँ कार्य हुए हैं उसमें 3 तो बनी हैं पेयजल योजनाएं और हमारे वहाँ 90 शौचालय बने हैं। सरकारी जो हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट काम करते थे वो 5 साल तक पूरा नहीं कर पाएंगे इस कार्य को, जो कि हिमोत्थान परियोजना के तहत 1 साल में ही पूरा कर लिया गया। The success of Himothan Pariyojana is apparent from the overwhelming response it has received from local communities, especially women who now enjoy a marked improvement in their quality of life. बहुत फायदा रहा, खास तौर पर मतलब बुजुर्गों बाहर जाना उन्हें परेशानी हुई, आप मतलब बढ़िया का जाना बीमार बीमार ले गया बढ़िया का जाना, खास तौर पर यो गर्भवती महिलाएं उन्हें लिए मतलब फायदा से। Improved personal hygiene, better environmental sanitation and an equitable distribution of interventions has led to a sense of empowerment, well-being and collective ownership. कुमरगांव खालसा में हिमोत्थान परियोजना के द्वारा जो कुमरगांव खालसा वालों ने अंशदान श्रमदान देकर उस कार्य को किया, उसी तहत से हमारे गांव वालों ने ये संकल्प किया कि हम भी इसी प्रकार अपना अंशदान श्रमदान देकर इस योजना को अपने गांव तक पहुंचाएं। 11 गाँवों में हिमोत्थान परियोजना की सफलता को देखते हुए उन गाँवों से लगे हुए पड़ोसी गाँव और उनके रिश्तेदारी के गाँव और उस विकासखंड के लोग आज हिमोत्थान परियोजना की डिमांड कर रहे हैं कि उनके गांव में भी ये परियोजना चलाई जाए। इसके लिए हमारे पास 62 गांव से हमारे पास ये एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। लोग खुद भी यहाँ पर शिष्टमंडल आके अपने गांव में इस योजना को चलाने की बात कर रहे हैं। To take forward Himothan Pariyojana, a memorandum of understanding was signed between Sir Ratan Tata Trust and the government of Uttarakhand in May 2004, which sets out the commitment of both in ensuring timely realization of goals under this initiative. हमारे गांव में पानी की सुविधा हो चुकी है और हमारे गांव में शौचालय भी बनाए गए हैं, जिससे अब मुझे स्कूल में आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उस समय जब मैं कक्षा 8 में थी, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुई थी और अब कक्षा 9 मैंने प्रथम श्रेणी से पास की है। मेरा स्कूल है हमेशा में न इज्जत और सुरक्षा बहुत बढ़ है। झम लेना कटायू ने तुम्हारू क्या करी बिचारी डाली झम, जड़ी बूटी फल फूली लकड़ों की चार की आम अखोड़ से आरू अनार तो सुना ढेकड़ी कूले भीमल की डाली लगा जरा सोची बिचारी डाली डाली झम, झम लेना कटायू